हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट पार्ट रे आमे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट चैप्टर किछि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करथिले। आज आउरी किछि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिबा। तो वीडियो को एंजॉय देखंतु, भल लागले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु। तो चलन डिस्कस करियो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट रे किछि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। चलंतु एटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करियो। आपन को बुक रो क्वेश्चन नंबर 8। From the following trial balance extracted from the books of Shivam, prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2022 and a balance sheet as on date. हमको trading account बनाने रही, profit and loss account बनाने रही, balance sheet बनाने रही। कोडी ना 31st March 2022। तो हमें लिखते हैं as on 31st March 22। तो ये फॉर्मेट अच्छी लिख करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट रो आगे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बननेबा। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस डिटरमाइन करिबा। बनी साल पर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करिया पीएल रो क्रेडिट साइड को, देन जेते सारा इनडायरेक्ट इनकम पीएल क्रेडिट शो करिबो और जेते सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर पीएल डेबिट शो करियो। तापर हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करिबा। तो फर्स्ट हमर काम होची आगे हमें कोन करियो ट्रायल बैलेंस को देखिबो। ट्रायल बैलेंस सहित तो किछ देखो एडजस्टमेंट देछि। एवरी एडजस्टमेंट रो दीटा इफेक्ट हुए, गोटे ट्रेडिंग डेबिट शो करा जाए और बैलेंस शीट रे शो करा जाए। हमें एडजस्टमेंट पढ़ी कि बुक में टिक मारिबा। फर्स्ट एडजस्टमेंट होची क्लोजिंग स्टॉक 1600 एट द एंड ऑफ द ईयर हम पाखे किछि क्लोजिंग स्टॉक अछि। सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, हॉर्सेस एंड कार्ट्स 15%। हम जो प्लांट एंड मशीनरी यूज करछे तार वैल्यू 10% रिड्यूस होईछि और हॉर्सेस एंड कार्ट्स जो यूज करछे तार भी वैल्यू 15% रिड्यूस होईछि। तो प्लांट एंड मशीनरी हॉर्सेस कार्ट रे टिक मार देबा। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum, कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराला 5%। तो कैपिटल भी टिक मारिबा। रुपीज 150 ड्यू फॉर वेजेस, वेजेस पेड कर सारा पर आउर 150 रुपीज अच्छी पेड करिया को। तो वेजेस से टिक मारिबा। पेड रेंट 50 रुपीज इन एडवांस, हमें एडवांस से रेंट किसी पेमेंट करछे तो रेंट रे टिक मारिबा। तो फर्स्ट हमें बनेबा ट्रेडिंग अकाउंट, देन हमें बनेबा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेबा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कोन जाए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ए तीन अंश मन रखिबो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जाए। तो हमें देखिए ये ओपनिंग स्टॉक कितने अच्छी। फर्स्ट लिखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 1600। देन परचेजेस, परचेज एंड सेल्स एक परचेज जो डेबिट बैलेंस 2000 और सेल्स दीजिए 4200 बाय सेल्स 4200। तापर कौन करियो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न माइनस करियो। परचेज रो परचेज रिटर्न, सेल्स रो सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स किछि देनी तो डायरेक्ट अमाउंट भी हमें पुट कर परिया 2000। एटी सेल्स होछि 4200। जदि हमको रिटर्न देइतन परचेज रिटर्न तो परचेज रो परचेज रिटर्न माइनस करतंदे नेट परचेज शो करतंदे, सेल्स रो सेल्स रिटर्न माइनस करतंदे नेट सेल्स शो करतंदे। ओके। नेक्स्ट जेते सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, वेजेस अमाउंट होची 800। तासने देखा टिक मराइतला सेते को हमें कोन एडजस्टमेंट पड़िबा। फोर्थ एडजस्टमेंट मेंशन होची 150 ड्यू फॉर वेजेस। 800 हम वेजेस पेड कर साल पर हमको और 150 रुपीस ड्यू अछि। तमे प्लस करबा आउटस्टैंडिंग, प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लिख परिबा नले ड्यू भी लिख परिया। 150 800 प्लस 150 950। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 150। ततळ अच्छे कैरेज जिते सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कोड शो करियो ट्रेडिंग रो डेबिट रे। कैरेज 160। क्लियर। एपड़े सेल्स हमें पकेछि। नेक्स्ट हमें कौन करिबा क्लोजिंग स्टॉक शो करिबा। हमरो फर्स्ट एडजस्टमेंट रे क्लोजिंग स्टॉक देखा रही 1600। तो अभी हमें क्लोज करके हमारे ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करिबा। मोर क्रेडिट साइड रो टोटल होछि 5800। एपड़े 950 150 1000 1100 1260 1260 ये होछि 3600 4860 4860 टंका मोर होछि एक्सपेंडिचर्स। तर मोर इनकम इतला 5800 0 10 6 4 7 8 9 940 मोर डिफरेंस अमाउंट होछि जोटा कि मोर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कर बोर्ड साइड रे हमें 5800 को टैली कर देबा।
ओके तो ये मोर ट्रेडिंग अकाउंट सरी जाइए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पड़ा ओपनिंग स्टॉक परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस 800 ता सर किसी ड्यू 150 तो टोटल अमाउंट ऐड करके 950 में शो कले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 150 कैरेज 160 सेल्स इतला 4200 एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक इतला 600 टोटल क्रेडिट अमाउंट इज 5600 एंड डेबिट अमाउंट इज 4860 तो माइनस कला पर मोर डिफरेंस अमाउंट वाला 940 तो कौन वाला सीधा ग्रॉस प्रॉफिट मोर ट्रेडिंग अकाउंट पर इमीडिएटली में कौन बनया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो पीएल क्रेडिट साइड को 940 ओके अब ये जितने सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करिबा कैपिटल ड्राइंग्स प्लांट में हॉर्सेस डेप्टर्स क्रेडिटर्स परचेस वेजेस कैश सैलरीज टू सैलरीज सैलरीज अमाउंट होची 800 सैलरीज पर अच्छी रिपेयर्स अमाउंट होची 190 तब अच्छी रेंट पेमेंट 450 किसी एडजस्टमेंट थिला लास्ट एडजस्टमेंट लेकर प्रीपेड पेड रेंट इन एडवांस आम एडवांस लेस करिया प्रीपेड 50 रुपीज तमाने एक्चुअली करंट ईयर रेंट होची 400 जितक आउटस्टैंडिंग ऐड हुए प्रीपेड कौन हुए माइनस हुए ओके नेक्स्ट बैड डेप्ट अमाउंट इज 500 तापर में पकया डेप्रिसिएशंस नेक्स्ट पकया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी depreciation on plant and machinery 10% of plant and machinery value is 12,000 10% is 1200 next horses and carts depreciation is 15% तो 15 by 100 into 2600 15% 260 130 390 हे गला हमारा इनडायरेक्ट इनकम किसी नहीं अभी क्या जहाँ भी हमारा एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर थिला ताको पे पीएल डेबिट शो करले अभी कौन करिया क्लोज करिया बोथ साइड हमारा क्रेडिट साइड रे टोटल अछि 940 डेबिट साइड रे टोटल अछि 1200 800 2000 2400 29 3290 3390 3480 मोर एक्सपेंडिचर मोर एक्सपेंडिचर अधिक होती आ इनकम कम होती मोर कौन बारे नेट लॉस 0 8 4 14 5 2540 नेट लॉस 3540 कौन गोटे आइटम आम छाड़ीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट देखा देती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% होता 5 by 100 capital value is 20,000 5,000 is 1,000 तो टोटल अमाउंट होगा 4480 तो आसगला 3540 मोर डेबिट साइड टोटल अमाउंट होची 4480 मोर एक्सपेंडिचर होची 4480 केवल मोर क्रेडिट साइड रे ग्रॉस प्रॉफिट था 940 तो 4400 गले 3540 तमाने मोर डिफरेंस आसुची 3540 जोटा कि मोर नेट लॉस बिजनेस मोर नेट लॉस है 3540 टोटल अमाउंट 4480 ओके आगे मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनैली ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट को मो पीएल क्रेडिट साइड को ट्रांसफर कली जिते सारा इंडायरेक्ट एक्सपेंडिचर थिला ताको पुट कली लाइक सैलरीज रिपेयर्स रेंट बैड डेप्ट जहाँ भी डेप्रिसिएशन होता और कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% जो 20,000 5% 1,000 मोर एक्सपेंडिचर टोटल पीएल डेबिट साइड टोटल आसला 4480 सेपटे किसी इंडायरेक्ट इनकम होता केवल ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट था 940 तो 4480 रु 940 माइनस कली मोर एक्सपेंडिचर अधिक था इनकम कम था तो मोर बिजनेस कौन आसला नेट लॉस आसला देखिए नेट लॉस देती 3,540 ओके ये आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और स्क्रीनशॉट नहीं पारे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा चलतु अभी गोटे बैलेंस शीट प्रिपेयर करें से क्वेश्चन नंबर 8 रे आम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट रे ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन कले प्रॉफिट लॉस नेट लॉस हम बिजनेस रही अभी आम बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा तो बैलेंस शीट देखिए फॉर्मेट अच्छी ये लाइबिलिटीज ये एसेट्स आगे आम ओनर सिक्यूरिटी शो करवा आउटसाइड लाइबिलिटीज शो करवा एपटे एसेट्स रे
जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स अच्छी फिक्स एसेट करेंट एसेट को आम शो करवा सर बैलेंस शीट प्रिपेयर कले मन रख जोरा सब डेबिट जितना तुमको ट्रायल बैलेंस देथिबो तो ट्रायल बैलेंस आम जत से एक्सपेंडिचर पकई सारा जो आइटम सब रही है डेबिट साइड आम एसेट शो कर और जो आइटम को क्रेडिट रही है आम लाइबिलिटी से शो करवा कहीं लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट एसेट ऑलवेज डेबिट ओके तासर जो एडजस्टेड इनफॉरमेशन देती है आम एडजस्ट करवा क्लियर तो फर्स्ट आम शो करवा लाइबिलिटी साइड कैपिटल मोर बिजनेस कैपिटल था 20,000 प्लस तापर आमको इंटरेस्ट मिलता इंटरेस्ट एंड कैपिटल 5% जोटा कि 21,000 लेस करवा नेट लॉस प्रॉफिट इतने आम कैपिटल इंक्रीज हुए और लॉस इतने आम कैपिटल रिड्यूस हुए ओके लॉस इतला 3540 0 10 6 9 4 10 7 17,460 अगेन लेस करिया ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स अमाउंट था 1,700 0 6 14 7 7 6 किलो 5 15,760 कैपिटल गला ड्रॉइंग्स प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू थी 12,000 ताटू लेस करिया डेप्रिसिएशन जोटा कि 10% देथिला एडजस्टमेंट रे 1,200 तो टोटल अमाउंट 10,800 नेक्स्ट हॉर्सेस एंड कार्ड्स आमर फिक्स एसेट जार वैल्यू था 2,600 ताटू लेस करिया डेप्रिसिएशंस 390 जोटा कि 15% था 2,210 नेक्स्ट डेटर्स था 3,600 नेक्स्ट देखिए क्रेडिटर्स लाइबिलिटी 2,600 परचेस जाइए कैश एट बैंक जहाँ भी डेबिट साइड रही है आम एसेट शो करवा जहाँ भी क्रेडिट साइड अच्छी आम लाइबिलिटी से शो करवा कैश एट बैंक अमाउंट इज 2,600 सैलरीज रिपेयर ओपनिंग स्टॉक रेंट मैनुअल बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी बिल्स पेबल 2,350 बैड डेट जाइए कैरेज जाइए फोन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस जोटा कि ड्यू थिला आम ट्रेडिंग डेबिट साइड प्लस करते वेजेस सहित अबिका आम लाइबिलिटी जेटू अच्छी आम आउटसाइड को दबार अच्छी से गोटे लाइबिलिटी तार सेकेंड ट्रिटमेंट कले जोटा कि 150 फिफ्थ एडजस्टमेंट होता पेड रेंट इन एडवांस प्रीपेड रेंट आम से रेंट रू माइनस करते अबिका शो करा जेटू बिजनेस प्रॉपर्टी 50 रुपीज इंटरेस्ट एंड कैपिटल में ऐड कर सकते क्लोजिंग स्टॉक पकेबा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट होची 1,600 ओके अभी क्या मैं टोटल कर देगा 15,760 प्लस 2,600 प्लस 2,350 प्लस 150 20,860 मोर लाइबिलिटी साइड टोटल मोर एसेट साइड टोटल 20,860 आसे दरकार तमाने मोर ठीक है जदि डिफरेंस अच्छे तमाने कुछ भूल करछे राइट तो आगे देखियो 10,800 प्लस 2,210 प्लस 3,600 2,600 प्लस 50 प्लस 1,600 20,860 तो ये आमर बैलेंस शीट फर्स्ट हमें शो कले ओनर्स इक्विटी कैपिटल थिला तदा हमके इंटरेस्ट एंड कैपिटल में प्लस कले जे हमर कैपिटल इंक्रीज होला बिजनेस रे लॉस हेतला सेटु हमें नेट लॉस को माइनस कले जदि बिजनेस रे प्रॉफिट हेतला हमें प्लस करतन ओके आउ प्रोवाइडर किसी ड्रॉ करछि तो हमें ड्राइंग्स कटो तो ड्राइंग्स को माइनस कले तो रिमेनिंग कैपिटल इज 15,760 एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिटर्स था 2,600 बिल्स पेबल था 2,350 आउटस्टैंडिंग वेजेस था 150 लाइफ साइड टोटल 20,860 प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन माइनस करके एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू अच्छी 10,800 हॉर्सेस एंड कार्स भी डेप्रिसिएशन माइनस करो वैल्यू अच्छी 2,210 डेप्टर्स 3,600 कैश एट बैंक 2,600 प्रीपेड रेंट 50 क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड टोटल भी 20,860 ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा चलते अभी आउ गए नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा आपन बुक पोर्शन नंबर 16
The following are the balances of MS Gupta on as on 31st March 2022. गोटे ट्रायल बैलेंस आमको देछि 31st March 2022 रे किछि इनफॉरमेशन दबा सहित ट्रायल बैलेंस रे ता सहित किछि एडिशनल इनफॉरमेशन देखो देछि प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स as on 31st March 2000 भूले 19 लिख देछि 2022 आफ्टर टेकिंग टू अकाउंट स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2022 6800 क्लोजिंग स्टॉक अछि 6800 प्लांट एंड मिशनरी टू डेप्रिशिएट 10% पेटेंट्स 20% salaries for the month of March 2020 amounting 1500 unpaid salaries March मास में पेड करिने तमने ड्यू अछि salaries रे प्लस करबा इंश्योरेंस इंक्लूड्स ए प्रीमियम 170 और पॉलिसी एक्सपायरिंग 30 September 2020 हमें प्रीमियम पे करू 170 रुपीस एनुअली ए जो प्रीमियम टा पे करछि सेरा पॉलिसी एक्सपायर हो 30 September बट हम बिजनेस एंड होछि 31st March तमने हमें 6 मंथ्स कोन करछे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करछे जोटा कि हम पे प्रीपेड बैड डेट रही 725 रेंट रिसीवेबल 1000 आम रेंट जो टिक रिसीव कर हमको रिसीव कर 1000 तो फर्स्ट कौन कर एडजस्टमेंट पढ़ी डायरेक्ट टिक मेरे जहाँ जहाँ से इनफॉरमेशन देखी कौन थी प्लांट एंड मशीनरी और पेटेंट सहित थी सैलरी सहित थी इंश्योरेंस सहित थी बैड डेट जोटा कि डेप्ट टिक मार और रेंट सहित थी तापर कौन बनइबा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ये हूँ फॉर्मेट तो ट्रेडिंग डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकेब क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक पकेब ओके तो फर्स्ट हमें ओपनिंग स्टॉक এটা কেবে প্রিপেয়ার করছে 31st March 2022 ওপেনিং স্টক দেখো লেখা আছে স্টক 1st April 2018 লেখা আছে পর সেটা 2021 হবে ওকে যেটা আমি ব্যালেন্স শিট প্রিপেয়ার করছি 31st March 2022 রে ওপেনিং স্টক 5760 দেন পারচেজেস परचेज अकाउंट है 40,675 क्रेडिट साइड देख रिटर्न आउटवर्ड है तो लेस करवा रिटर्न आउटवर्ड जार अमाउंट हो 500 तब नेट परचेज 40,175 नेक्स्ट वेजेस अमाउंट हो 8480 fuel and power 4730 कैरेज ऑन सेल्स होची इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज ऑन परचेज होची डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आम पकेबा कैरेज ऑन परचेज कैरेज ऑन परचेज 2040 ये थी आम डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक शो करवा सेल्स अमाउंट होची 98,780 लेस करिया रिटर्न इनवर्ड जो देखो 680 लेस कला पर 98,100 नेक्स्ट शो करिया क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट होची फर्स्ट एडजस्टमेंट था 6,800 वे क्लोज कर दबा 900 814 1 10 1,04,900 मोर होची इनकम एक्सपेंडिचर पुट करिवा 5760 प्लस 40,175 प्लस 8480 प्लस 4730 प्लस 2040 मोर एक्सपेंडिचर आसला 61,185 10 5 5 9 1 8 के 7 4 के 3 10 43,715 मोर ग्रॉस प्रॉफिट केते होची 43,715 ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड 1,04,900 ओके मोर सेल्स रु रिटर्न इनवर्ड को माइनस कली मोर नेट सेल्स है 98,100 एट द एंड ऑफ द ईयर मोर क्लोजिंग स्टॉक अच्छे 6,800 क्रेडिट साइड टोटल है 1,04,900 तारू मोर डेबिट साइड जहाँ भी आइटम थी ओपनिंग स्टॉक परचेज परचेज माइनस कर नेट परचेज शो कली और जिते सारा डायरेक्ट सब जाक डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस फुएल एंड पावर कैरेज एंड परचेज सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड टोटल आसला 61,185 इनकम रो एक्सपेंडिचर को माइनस कली मोर डिफरेंस अमाउंट आसला 43,715 जोटा कि मोर ग्रॉस प्रॉफिट ओके तापने मु ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करी पीएल क्रेडिट को ग्रॉस प्रॉफिट बटन 43,715 ओके नेक्स्ट जिते सारा इंडियन एक्सपेंसेस पीएल पकेबा पीएल डेबिट रे
कैश परचेज रिटर्न वेजेस फुल कैरेज एंड सेल्स जिते के सेल एक्सपेंडिचर होची सेटा होची इनडायरेक्ट आ जते सेटा परचेज पे एक्सपेंडिचर होची सेटा होची डायरेक्ट तो कैरेज एंड सेल्स होची इनडायरेक्ट कैरेज एंड सेल्स 3200 salaries next salaries amount is 15000 salary sheet किछि additional information थिला third adjustment salaries for the month of March 2022 amounting 1500 unpaid अछि तमने हम आउटस्टैंडिंग में प्लस करिवा 15000 दे सला परे आउरी हमको 1500 दबार अछि तो टोटल एक्सपेंडिचर इज 16500 general expenses 3000 insurance amount होची 600 insurance रे भी किछि additional information थिला 4 bit insurance includes a premium of is 170 and policy expiring on 30 September 2022 लेस करिया प्रीपेड हम गोटे प्रीमियम पेमेंट करूँ 170 रुपीज बट ये जो 170 रुपीज पेमेंट करिचे से 170 रुपीज पॉलिसीटा एक्सपायर हम जाकि 30 सेप्टेम्बर 2022 रे आमर बिजनेस एंड होची 31 मार्च तमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर आम 6 मंथ प्रीमियम एक्सट्रा रहीचे तो जो प्रीमियम था 170 इंटू 6/12 कर दिबा 85 रुपीज आम कौन अच्छी एक्सट्रा अमाउंट अच्छी तमने आम माइनस करा 515 रुपीज होची करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स सडल मन रखिबो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड हुए प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को माइनस करा जाए हमारे जो इंश्योरेंस प्रीमियम टा होल ईयर पे 170 रुपीज पे कर देते 170 रुपीज जो प्रीमियम टा पॉलिसी एक्सपायर होता 30 सेप्टेम्बर बट आम बिजनेस मार्च एंड होची तो एप्रिल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 6 मंथ प्रीमियम कौन था एक्सट्रा था जब इयरली अमाउंट हो 170 तो 6 मंथ में 85 रुपीज तो गवर्नमेंट डिडक्ट कर देले नेक्स्ट एडजस्टमेंट इतला बैड डेट फर्दर बैड डेट अमाउंट इज 725 एडजस्टमेंट सेकेंड एडजस्टमेंट इतला डेप्रिसिएशंस ऑन प्लांट एंड मशीन वैल्यू थिला 20000 तार डेप्रिसिएशन इतला 10% 20000 और 10% इज 2000 नेक्स्ट पेटेंट्स डेप्रिसिएशन इतला 20% पेटेंट्स वैल्यू थिला 7500 और 20% यानी 1500 क्रेडिट साइड रेंट गोटे अमाउंट थिला जोटा कि आम रिसीव करते 9000 ता सहित किसी एडिशनल इनफॉरमेशन थिला रेंट रिसीवेबल आउरी हमको रिसीव करा अछि त माने प्लस करबा एक्रू 1000 टोटल अमाउंट 10000 ठीक है अभी हमें क्लोज करिबा 43715 10 53715 मोर होची क्रेडिट साइड डेबिट साइड टोटल होची 3200 प्लस 16500 प्लस 3000 प्लस 515 प्लस 725 प्लस 2000 प्लस 1500 27440 5 11 चले 7 6 चले 2 13 चले 6 चले 26275 मोर डिफरेंस हमर होची 26275 जोटा कि मोर नेट प्रॉफिट 53715 ओके मोर ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल क्रेडिट साइड को ट्रांसफर करली इनडायरेक्ट इनकम केवल रेंट थिला 9000 रिसीव करथले 9000 रिसीव कर सारा पर आउरी मटे रिसीव करैतला 1000 तो टोटल रेंट होची 10000 से वर्ष इनकम टोटल क्रेडिट साइड असला मोर 53715 रुपीस ए वर्ष एक्सपेंडिचर थिला कैरेज एंड सेल्स सैलरीज जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस डेप्रिसिएशंस ए सब शो कला पर मोर पीएल डेबिट साइड टोटल अमाउंट असला 27400 53715 रो 27440 माइनस कली मोर नेट प्रॉफिट आसुची 26275 तो आप स्क्रीनशॉट नहीं पारे तापर आम आर बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा
चलतु अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा आगे ट्रेडिंग अकाउंट रे आम ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन कले 43,715 प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट डिटरमाइन कले 26,275 नेक्स्ट अभी कौन करवा बैलेंस शीट प्रिपेयर करवा क्रेडिट साइड जो जो आइटम रही है आम लाइबिलिटी शो करवा डेबिट साइड जो जो आइटम रही है आम एसेट शो करवा कहीं एसेट ऑलवेज डेबिट लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट ओके ता सहित जहाँ भी एडिशनल इनफॉरमेशन अच्छी एडजस्टेड करवा तो फर्स्ट में पकड़ा कैपिटल क्रेडिट साइड अच्छी देख 62,000 तार में ऐड करवा नेट प्रॉफिट आम नेट प्रॉफिट ला 26,275 तमें 275 628 628 88 275 लेस करवा ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स देखो टल रही 5245 0 3 0 83,030 83,030 रुपीज क्रेडिट साइड आउ जहाँ आइटम पुट कर सेल्स पकई रिटर्न ऑर्डर्स कैपिटल ओनली सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट इज 6,300 क्रेडिट साइड आइटम सरीगला अभी आम जहाँ भी डेबिट साइड रे आइटम रही है आम पुट कर फर्स्ट आम आगे फिक्स एसेट पकईदेव जोटा रही बिल्डिंग्स 32,000 फ्री होल लैंड 10,000 मशीनरी अमाउंट हो 20,000 तार एडजस्टेड इनकम डेप्रिसिएशन प्लांट वैल्यू डेप्रिसिएशन 10% जार वैल्यू 2,000 तो रिमेनिंग वैल्यू 18,000 नेक्स्ट पेटेंट्स वैल्यू 7,500 लेस करिया डेप्रिसिएशन जोटा कि 20% देता 1,500 6,000 नेक्स्ट पक्या सन्डे डेटर्स अमाउंट 14,500 लेस करिया फर्दर बैड डेट 725 10 में 5 9 7 14 7 13,775 तब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कैश इन हैंड अमाउंट हो 540 कैश एट बैंक अमाउंट 2630 परचेज अकाउंट रिटर्न वेजेस कैरेज अब ये जिते सब एडिशनल इनफॉरमेशन पुट करवा प्लांट मेसिन पकई दीचे सैलरीज थिला आउटस्टैंडिंग सैलरीज आम सैलरीज ऐड करते पीएल डेबिट रे अबिका लाइबिलिटी शो करवा जेहतु से आउटस्टैंडिंग अच्छी 1,500 इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस जोटा कि लेस करते 75 रुपीज फर्दर बैड डे माइनस कर दीचे रेंट रिसीव्ड जोटा कि एक्यूर्ड रेंट थिला 1,000 आमको मिलवार अच्छी तमें आम प्रॉपर्टी तापर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट हो 6,800 अब क्लोज कर दबा 0 3 5 3 8 6 9 10 90,830 पूरा डेबिट साइड 32,000 प्लस 10,000 18,000 प्लस 6,000 प्लस 13,775 प्लस 540 प्लस 2630 प्लस 75 प्लस 1,000 प्लस 6,800 90,820 चेक कर दबा उठे 32,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 कैश इन 540 प्लस 540 प्लस 630
2000 plus 75 plus 1000 plus 6800. Purchase, return wages, carriage and purchase, buildings, fuel and machine patterns. Sunday debtors 14,500 फॉटर बैटर which is 10.5 9.7 14 प्लस 8 ठीक अच्छे आम टिके एसेट से डिफरेंस बाहर आउट चेक करवा 32,000 प्लस फ्री ऑफ लैंड इज 10,000 प्लस मेसिनरी वैल्यू इज 18,000 प्लस पेटेंट वैल्यू 6,000 plus 13,775 plus cash in hand 540 plus cash at bank 2630 prepaid insurance 75 sorry prepaid insurance 85 once meter half tilla 85 plus 1,000 plus 6,800 90,830 90,830 ओके जहाँ भी हमें एडजस्टमेंट थिला हमें ट्रेडिंग अकाउंट रे और पीएल अकाउंट थारे शो करिबा और बैलेंस शीट रे थारे शो करिबा फॉर एग्जांपल जेमिति हमें सैलरी थिला पीएल रे हमें ऐड करथिले एठी बैलेंस शीट रे शो कले डीटा ट्रीटमेंट होला ठीक से बोली मेसिन और डेप्रिसिएशन हमें पीएल डेबिट रे शो करथिले पेटेंट और डेप्रिसिएशन पीएल डेबिट रे शो करथिले अगेन हमें कोन कले एसेट रो माइनस कर तारा डबल ट्रीटमेंट फर्दर बैड डेट 725 पीएल और डेबिट रे शो करथिले प्लस 14,500 डेबिटर्स रो माइनस करके शो कले प्रीपेड इंश्योरेंस हमें इंश्योरेंस रो लेस करथिले अभी हमें शो कले सेकंड ट्रीटमेंट से बोले एक्यूरेट रेंट हमें रेंट रे ऐड करथिले जेटो हमको मिलिवार अछि सेटो हम एटा सेकंड ट्रीटमेंट कले क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग रो क्रेडिट साइड रे शो करथिले अभी बैलेंस शीट रो एसेट साइड रे शो कले तो ए बोले हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करिबा आई होप आपन वीडियो भल लागिबो आ किछि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करथिबो आज रे वीडियो माध्यम रे हमें फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट रो किछि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कले जदि ए रिलेटेड आपनकर किसी डाउट हो तो मते कमेंट सेक्शन में पचार पारे और नेक्स्ट पार्ट रे हमें आउ किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके ए चैप्टर को एंड करबा थैंक यू।